So today we have a new problem which name is binary subarray with sum. LeetCode 930 problem. So let's read the problem statement. So problem is saying that we have given a binary array nums and an integer goal. Return the number of non-empty subarrays with the sum goal. Okay. A subarray is a contiguous part of a array means लगातार चलने वाला part होना चाहिए ठीक है contiguous part. So let's take an example. If my nums array is 10101, it's a binary elements are there. So and goal is 2. So we have to find the number of subarrays with the sum of goal. So let's see the explanation part that four subarrays are bolded and underlined below. So a subarray can be made like 101. This can be a subarray because the sum will be equals to goal, which is true. So 101 can be there, 1010 can be there, then 0101 can be there. Here you can see 101, 1010, 0101 can be there, and 101 can be there. So there are four subarrays. That sum is equals to our goal. So let's take an example two. If my nums equals to 00000, okay, and the goal is also 0. So the number of subarrays with some 0 is 15 because like it can be made like 0 फिर number of subarrays बन सकते हैं फिर 0 0 को एक पेयर लेके फिर 0 0 को एक पेयर लेके फिर तीन zeros को एक पेयर लेके मतलब total number of subarrays 15 बनेंगे ठीक है. So now let's see the approach for this. Yeah, for the pros part, what we will do is it's a like sliding window approach. We will use it here. So this is the array and this is the goal. So what we will do is we will find the prefix sum. So prefix sum start with 0, then we will add the prefix previous elements in that on that number. So 0, then 0 plus 1, then this will be 1, then 1 plus 0, this will be 1, then 1 plus 1, 2, then 1, 2 plus 0, 2, 2 plus 1, 3. So this is my prefix sum. So prefix sum मेरे को दिया हुआ है ठीक है. Now the algorithm part is, now let's see this. Okay, so we have to find the goal 2, which we have to find the number of subarrays with the goal 2. So what we will do, we will find at most subarray with some 2 minus at most subarray with some 1, because at most subarray with some 2 will consist subarray with some 2, subarray with some 1, and rest of the things. Okay, and at most subarray with some 1 will consist, at most subarray with some 1 consist sum with the goal 1 and rest of the things. So this minus this will be, will give me a goal with 2. Okay, so this is my subarray. So it's a sliding window technique. So what will I will do is I'll to use two pointers I और j. I pointer आगे जाएगा, j pointer इनिशियली दोनों 0th इंडेक्स पर रहेंगे ठीक है. नाउ I'll चेक कि ये वाला ये इसके लिए हो रहा है एट मोस्ट सवेरे विथ सम 2 के लिए ठीक है. सो आई विल चेक कि यार इसका सम कितना है, 1 है तो काउंट को आगे बढ़ा दूंगा 1 की तरफ और आई को भी आगे बढ़ा दूंगा. अब भी 1 है, सम काउंट को आगे बढ़ाऊंगा आई को आगे बढ़ाऊंगा. अब 2 है, काउंट को आगे बढ़ाऊंगा और आई को भी आगे बढ़ाऊंगा. जब तक के लिए आगे बढ़ाऊंगा, अगर मेरा सम ग्रेटर देन के आ जाता है हियर, इसके लिए कर रहा हूँ सब एटमोस्ट अवेलेबल सम 2 के लिए, अगर मेरा सम ग्रेटर देन 2 आ जाता है उस केस में क्या करूंगा, मैं जे को डिक्रीज करूंगा, जे को आगे बढ़ाता जाऊंगा और काउंट को डिक्रीज करता जाऊंगा. जे को आगे बढ़ाऊंगा, काउंट को डिक्रीज करूंगा. सो नाउ लेट्स सी द कोड so that we can understand properly. Yeah, for the coding part what I will do is I'll create a function, solve function. That solve function will consist nums array and goal, and minus another solve function nums array comma goal minus 1. Why goal minus 1? I told you about this ki at most sum array with sum 2 minus at most sum array with sum 1. This will give me exact goal which is 2 here. So this will give me exact 2. So now let's create the function for this. Int solve. In solve function what I will pass? Nums and goal. So vector int nums comma int sum. ठीक है.
Now what I will do, I will check a condition. What about if my sum is less than 0? If my sum is less than 0, in that case I will directly return 0. Okay. Now what I will do, I will create a variable which is prefix sum. Initially it will be 0, and int j, which is my pointer, initially it will also be 0, and int count equals to 0. Now I will apply a loop for int I equals to 0 to I less than nums dot size, then I plus plus, and now I will check कि if, now मैं पहले तो क्या है कि ऐड करता जाऊंगा प्रीफिक्स सम में, सो प्रीफिक्स, सो इसको ऐसे बना देते हैं प्रीफिक्स सम, तो प्रीफिक्स सम प्लस इक्वल्स टू नम्स ऑफ आई, ऐड करता जाऊंगा नंबर को लाइक दिस की पहले किया था मैंने ये वाला प्रीफिक्स सम, ये वाला बनाया मैंने, सो ऐड करता गया नंबर, ठीक है। नाउ ऐड करता गया, और नाउ अब मैं चेक करूंगा कि वाइल जब तक के लिए मेरा सम इज प्रीफिक्स सम इज लेस देन, सॉरी प्रीफिक्स सम इज ग्रेटर देन माई, जो सम है गिवन सम है, ठीक है, जब तक के लिए ये कंडीशन ट्रू है, इस केस में मैं क्या करूंगा कि मैं जे वाले पॉइंटर को, मैंने बोला था प्रीफिक्स सम ग्रेटर देन के हो जाता है, के इज माई सम, ठीक है। इस केस में क्या करूंगा, जे को आगे बढ़ाते जाऊंगा, काउंट को डिक्रीज करते जाऊंगा, काउंट अपना आप डिक्रीज हो जाएगा, फिर मैं फास्ट की साउथ डिक्रीज करते जा रहा हूँ, प्रीफिक्स सम प्लस इक्वल टू, सॉरी माइनस इक्वल टू जो मेरा जे है, तो जे को मेरे को इंक्रीज करना है, तो नम्स ऑफ जे प्लस प्लस, ठीक है। ये ऐड भी करता गया और डिक्रीज भी करता गया, बाद में इसके क्या कर दूंगा, काउंट प्लस इक्वल टू जे माइनस आई प्लस वन, बिकॉज उन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो जे माइनस आई प्लस वन, ठीक है, सॉरी आई, एक्चुअली आई माइनस जे प्लस वन, सॉरी, बिकॉज आई आगे रहेगा, ठीक है, जे प्लस वन, this should be there. And finally what I will do, I will return our answer. So after this loop I will return our count. So now let's run this code and see if this will work or not. Nums comma bool minus 1. So what is the expression result reduced? Now run this code and see if this will work or not. Yeah, it is working perfect. Let's submit this code, and now it will work perfect, I know. Yeah. So this was the complete solution for this. If you find this helpful, then please like, share, and subscribe. And space complexity and time complexity, you will comment in my comment section. Okay.